Okay, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all doing well. In this session, I am going to solve this paper. This was the last paper that we had, October, November 2021. We will solve this paper. But before we start, let me just tell you, I have a lot of other content available on the channel as well. If you look at the description, you'll find other yearly past papers from 2016 to 2020. You'll find a lot of solved papers from 2016 to 2020. Variant 2 mostly honge wo, but you might find some other variant somewhere as well. But mostly 2016 to 2020 tak sare paper 2 aapko mil jayenge solved. You also have a list of some major topics there in the description, जिनके ऊपर आपको topical past papers की और कुछ quick review of concepts की videos मिल जाएंगी. I'm sure you'll find them helpful. So explore them if you want. In this session, we are going to do October, November 2021, inshallah. Okay. Yes, 85 to 90 are pretty good for an A star. Yeah, so that should be very safe actually. Okay. Anyway, let's begin with this. So this is October, November 2021, paper 2, variant 2. Okay, that's what we're doing. Let's begin. Okay, so the first one. Jasmine buys a family holiday to India. Here's some information about the cost. So we are given that in October, Jasmine pays a deposit of 12% of the total cost. She pays the rest of the total cost in December. So she has paid 12% in October of the total cost. This is the total cost. And the rest is paid in December. So baki jitna bhi hai, wo December mein pay hua hai. We have to calculate the amount that she pays in December. Okay. Agar 12% usne October mein pay kiya, what is she going to pay in December? She's going to pay the rest. 100% में से आप 12% minus कर दें, तो December में कितना उसने pay करना होगा? 88%. So essentially all we have to do here is we have to calculate 88% of 2250. So let's do that. 2250 multiplied by 88 over 100, or you could just multiply this by 0.88. That's the same thing. You'll get the result from this. आप calculator पे कर लेंगे. 2250 into 0.88. That gives me $1,980, and that's what your final result here should have been. Let's move on to the next part. Now it says find the ratio cost of flights with cost of hotel. या अपने रेशियो फाइंड करने, you've got to give your answer in its simplest form. तो basically आपने decimals में convert नहीं करना, integer form के अंदर whatever is the simplest form, that's how you're going to give your answer. Okay, so it says cost of flights and cost of hotel. These are the two costs that we're talking about, 700 and 1550. The quickest way of doing this would be कि आप ये fraction डाल दें calculator के ऊपर. 700 is the cost of flights and 1550 is the cost of hotel. आप क्या करेंगे? 700 over 1550. You'll put this on your calculator. आप calculator पे डाल देंगे. 700 over 1550. Let's see what that gives us. That gives me 14 over 31. तो अगर इसको fraction form में हम लिखें इस ratio को, that will be 14 over 31. लेकिन उसने आपसे ratio form में answer मांगा है, तो आप क्या करोगे? इसको उस form में लिख दोगे यहाँ पे. Let's say this is 14 ratio 31. And that's what your final result here is going to be. Okay. Okay, let's move on to the next part. Now it says Jasmine changes $350 into rupees. The exchange rate is $1 to 71.6 rupees. ये उसने exchange rate दिया हुआ है आपको. Now on holiday, she spends 19,500 rupees. Okay, so out of these $350 जो उसने convert किए थे rupees के अंदर, उसमें से उसने 19,500 rupees spend कर लिए. Now she changes the rest back to dollars at the same exchange rate. तो बाकी जितने भी rupees में उसके पास जितने बच गए, उसने वापस dollars में convert कर लिए. Okay, so we are basically starting from $350. उसके पास तो start में amount है, that is $350. उसमें से उसने spend कितने कर लिए हैं? Spend उसने कर लिए हैं 19,500, लेकिन वो rupees में information दी हुई है. And we've got to calculate the amount of money she is left with
मतलब बेसिकली जब वो चेंज करेगी बाद में डॉलर्स के अंदर, तो बाकी जो उसके पास अमाउंट रह गई है वो आपने फाइंड करनी है। और अपने आंसर जो देना है वो ऑफ कोर्स जब उसने डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया है, आपने आंसर अपना एंड पे डॉलर्स के अंदर देना है। Now, how do we think about this? Now, there could be many different ways of thinking about it. One way is that you say this is the starting amount, $350. Since you want your final result in dollars, तो आप क्या करें, इसको एज इट इज रहने दें $350 को, और आप कहें कि अच्छा उसने 19,500 जो स्पेंड किया है उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। So let me just write it like this first. So मैं इस तरह से लिख लेता हूँ. So I've got dollars here, I've got rupees here. At the start, I've got $350. ये आपके पास starting amount है. उसमें से कितना spend हो गया? 19,500 is spent on that. अब जो final आपके पास remaining amount है, वो आपने figure out करनी है. But that final amount has to be written in dollars. ये आपने डॉलर्स में फाइंड करनी है, जो आपकी फाइनल अमाउंट होगी, आपको ये वाला नंबर चाहिए यहाँ। $350 जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो तो आपके पास है वहां पे, you already have the starting amount $350. What you can do is you can actually convert this amount to dollars. 19,500 rupees को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसने आपको ये एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, डॉलर और 71.6 rupees. $1 corresponds to 71.6 rupees. What we can do is we can just use the ratio method here. हम साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं. If $1 corresponds to 71.6 rupees, what is 19,500 rupees going to correspond to? इसको हम x कह लेते हैं यहाँ पे. Right? Ratio method से इसको find कर लें. Now again, there are multiple ways of thinking about it. One way is कि आप इस तरह से cross multiply कर देते हैं. So we could do that. We could say this is going to be 71.6x equals 19,500 multiplied by 1, and that's going to give you this amount. 19,500 के corresponding amount dollars में कितनी होगी? 19,500 divided by 71.6, and that's going to be 272.346. ये मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई डॉलर्स के अंदर 272.346. अब मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 350 में से माइनस कर दिया अमाउंट, and that gives me 77.654. ये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रहेगी डॉलर्स के अंदर. उसने कहा था गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट. अगर आप ये नहीं करेंगे आपका 1 मार्क कट जाएगा. तो आपने जो आंसर देना है, इट हैज टू बी टू द नियरेस्ट सेंट. इसका क्या मतलब है? नियरेस्ट सेंट का क्या मतलब है? 0.01 डॉलर. ये आपका एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए, ठीक है. तो इसको आप राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो बेसिकली आपने क्या करना है उसको इस तरह समझ सकते हैं. डॉलर्स में अगर लिख रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर देना है. दैट्स गोइंग टू बी $77.65, and that's your final result. Okay, all right, that's good. बिल्कुल, अल्लाह करे वाकई में हो जाए इतने का डॉलर, होपफुली सम टाइम सून. फाज़ैन बेटा आप यहाँ पे क्या करें, आप जाके अपने ए लेवल्स की बाकी पेपर्स की तैयारी करें. Okay, let's move to part C. The table shows the number of tourists and the total tourist spending for some countries in 2016. Okay, so आपके पास यहाँ पे क्या है? You've got number of tourists and the total spending by those tourists for these 4 countries. यहाँ आपके पास 4 countries हैं, इनके आपको tourist numbers हैं, उनके spending numbers हैं. Now we have to calculate how many more tourists visited India than Kenya in 2016. अभी 2016 का डेटा है सारा. तो बेसिकली आपने क्या करना है, इंडिया में जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं उसमें से माइनस कर देना है जो आपके कीनिया में नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, इसको माइनस कर देना, ठीक है. नाउ यू कैन डू इट by converting this standard form
इन अ वे कि आप क्या कर सकते, आप बेसिकली छोटे पावर में कन्वर्ट करते हैं। आप सेम पावर आपने करनी होती है, वैसे तो दोनों नंबर्स की आपने सेम पावर करनी है, ये 10 की पावर सेम करनी है। आप दोनों को 10 पावर 7 में कर सकते हैं या 10 पावर 6 में कर सकते हैं, बट एन इजियर वे टू डू दिस है जो छोटी पावर है उसमें कन्वर्ट कर दो, राइट। सो बेसिकली जो आपका ऊपर वाला नंबर है इसको आप लिख सकते हो, since this is 10 raised to power 7, you can break it down like this. You can say this is 1.46 into 10 raised to power 1 into 10 raised to power 6, and that becomes 14.6 into 10 raised to power 6. तो आपने ऊपर वाला नंबर भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. This is 14.6 into 10 raised to power 6. You've got this number and you've got this number. इन दोनों को subtract कर दें. आप देख लें आपके पास क्या आता है इससे. 14.6 में से 1.27 minus कर दें. That gives me 13.33 into 10 raised to power 6, but this is not standard form. Standard form के अंदर decimal से पहले आपको सिर्फ एक single number चाहिए होता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, and it will become एक decimal आप यहाँ पे इधर लेकर आओगे लेफ्ट साइड के ऊपर, so it's going to become 1.333 into 10 raised to power 7, and that's going to be your final result. Now this is one way of doing this. अगर ये paper 1 में होता तब तो आपको ऐसे ही करना पड़ता, but this is paper 2. So another idea is to just put everything in your calculator. Calculator का mode आप scientific form में कर दें. अगर आप calculator का mode scientific form में कर देंगे, आप ये सीधा calculator में डालें, subtract कर दें, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, उससे आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. ओके, पेपर 2 या कैलकुलेटर अलाउड है, आप सीधा कैलकुलेटर पे डालेंगे, पूरा फॉर्म आपको साइंटिफिक कर दें कैलकुलेटर के अंदर, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, and you'll get your result directly from the calculator as well, and that's okay. Acha. Now it says calculate the average amount per tourist, amount spent per tourist in China. So we are talking about China here in 2016. Okay. Average amount spent per tourist. तो क्या मतलब, आपके पास टोटल अमाउंट स्पेंट है और जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, आपको बेसिकली देखना है कि ऑन एवरेज एक टूरिस्ट ने कितना स्पेंड किया, राइट. सो what we do is we just take this total spending and we divide that by the number of tourists. तो आपको per tourist एक एवरेज नंबर मिल जाएगा, उसका मैं सिर्फ एक डिवीजन करनी है यहाँ पे. 4.44 into 10 raised to power 6. That's the total spending in China divided by the total number of tourists. That's 5.93 into 10 raised to power 7. या पूरा कैलकुलेटर में डाल देंगे and we'll get a result from that directly. Let's see what we get from that. 4.44 into 10 raised to power 10 divided by 5.93 and 10 raised to power 7. Now I get 748.7 from that. इसने कहा to the nearest dollar आपने आंसर देना है, इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे, 749, and that's going to be our final result here. Okay, let's move on. Now part 2 of this. It says from 2014 to 2016, the total amount spent by tourists in Madagascar, it increased by 23.5%. Okay, so basically 2014 से 2016 में आपका जो चेंज आया है, that's basically 23% increase, 23.5% increase. ये आपका increase हुआ है from 2014 to 2016. Now, what was the amount in 2014? We don't know that. ये हमें find करना है. Let's call that X. 2016 में कितना आपके total amount थी Madagascar में? Let's figure that out. That was 9.13 into 10 raised to power 5. That's this number here. 9.13 into 10 raised to power 5. 9.13 into 10 raised to power 5. We have to figure out कि 2014 में spending कितनी थी. अच्छा. Now, let's see what's happening here. Whatever was your original number in 2014, उसको क्या हुआ है, उसको हमने 23.5% increase कर दिया. 23.5% increase कर दिया उस number को. So what we can do is we can say, let's call this
ओरिजिनल अमाउंट जो आपका ओरिजिनल था, लेट्स कॉल दैट 100%। 100% में आपने कितना ऐड कर दिया? आपने 23.5% ऐड कर दिया, राइट? 23.5% आपने ऐड कर दिया। व्हाट डज दैट गिव यू? दैट गिव्स यू 123.5%। सो आपकी जो अमाउंट है वो इतनी इंक्रीज कर गई, इस परसेंटेज पे आ गई। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका क्या होता है, आप इसको डायरेक्टली क्या करो, अब इसको लिख दो 123.5 over 100। यू कैन से ये जो अमाउंट x थी उसको आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 123.5 over 100 के साथ। तो आपको जो रिजल्ट मिला उसका वो क्या मिल गया? रिजल्ट आपको मिल गया 9.13 into 10 raised to power 5। And this is going to give you the value of x now। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। Just put that on your calculator। x से evaluate कर लें, देखें क्या आता है। 9.13 into 10 raised to power 5 into 100 divided by 123.5, and that gives me 739,271 point something, but we don't need that. This is your final result. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं if you want, or you can round it off to 3 significant figures, and that's going to be 739,000. That's going to be your final result. ठीक है, you can actually just leave it like this as well, and that will be okay. Minimum significant figures आपके 3 होने चाहिए. More than that is okay. उसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, let's move on. Question number 2. Now it says the pie chart summarizes the ages of people at a science fair. So we've got this pie chart here. It summarizes the ages of people at a science fair. Write down the model class. Model class का क्या मतलब होता है? जिस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो. So if you look at this pie chart, आप देखें सबसे ज्यादा एंगल कहाँ पर है? Angle corresponds to frequencies, right? तो सबसे बड़ा एंगल कहाँ पर आ रहा है? 144 degrees. ये कौन सी क्लास है? This is basically this class 16 to 20. That's your model class. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 to 20. All right. अच्छा. Now it says there were 90 people aged over 30 at the science fair. Okay. तो इसका मतलब ये है जो over 30 वाला आपके पास पाई है और वो जो सेक्टर है उसमें टोटल नंबर कितना है? दैट नंबर इज बेसिकली 90। यहाँ पे नंबर 90। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल एजेड 16 to 20। तो ये 16 to 20 वाला जो नंबर है वो कितना है? ये आपको फिगर आउट करना है। लेट्स कॉल दैट x। नाउ अगेन वी कैन यूज रेशियोज। वी कैन से 54 डिग्रीज जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? 54 डिग्रीज इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 90। ओके, तो 144 डिग्रीज जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा? Let's call that x. Again, we can cross multiply. उसको fraction से भी कर सकते हैं, cross multiplication से भी कर सकते हैं. This is what we get. We have 54x that equals 90 into 144, and we're going to get the value of x from here. ये देख लें क्या आता है हमारे पास 144 into 90 divided by 54, and that gives me 240, and that's what you should be getting here. The number of people in this sector here, that is 240. Okay, all right, let's move on. Part B of this. Now it says 250 students, they entered a science competition. The table summarizes their scores. आपको इनके scores नजर आ रहे हैं और उनकी frequency नजर आ रही है. We have to complete the histogram to represent this data. Now remember, whenever you read this, whenever you see this word histogram, the first thing that should come to your mind is histogram में y-axis के ऊपर क्या होता है? Frequency density होती है. y-axis के ऊपर frequencies नहीं आ रही होती, frequency density आ रही होती है. Okay? आपने histogram बनाना है, सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा? आपको frequency densities calculate करनी पड़ेगी. So let's add a row to the table. Let's call that frequency density. Frequency density का formula क्या होता है? Remember, it's frequency over class width. That's what frequency density is. Class width आपके पास क्या है? We can write them down here. 40
20, that's basically the upper limit minus the lower limit, right? So 60 minus 40 is 20, so 70 minus 60 is 10, 80 minus 70 is 10, 100 minus 80, that is 20. So this is also 20. Okay, now let's calculate frequency densities. 36 over 40, that gives us 0.9. 48 divided by 20, that is 2.4. 64 over 10 should be 6.4. 60 over 10 should be 6. 42 over 20, that should be 2.1. आपने frequency density सारी calculate कर ली. अब इनको आपने plot करना है इस histogram के ऊपर. 0 से लेकर 40 तक, you'll have this number 0.9. Okay, from 0 to 40, we've got 0.9 here. ये 0.9 पे आपका आ जाएगा 0 से लेकर 40 तक. Okay, so you've got you should be using a ruler for this. Okay, I'm doing it by hand because unfortunately मैं PDF के ऊपर ruler नहीं use कर सकता OneNote का, but you should be definitely doing this using a proper ruler ताकि lines आपकी straight हो. 0 to 40 we've got 0.9. So then from 40 to 60 we've got 2.4. 2.4 from 40 to 60. This is the next class that we've got. Okay, then from 60 to 70 we've got 6.4. 6.4 should be here. So we've got this thing here. 70 to 80, 6 is already draw kiya hua hai. From 80 to 100, it should be 2.1, and that is going to be here. So this is what your histogram looks like. That earns you 3 marks. ठीक है, ये आपने यहाँ पे करना था. That's your histogram. So you calculate frequency density, and then you plot that histogram. Make sure to use a ruler there, ताकि आपके values accurate आ रही हो. Okay, let's move on. Now, part 2 of this, it says students who scored 75 or more are awarded a distinction. 75 या उससे ज़्यादा. Okay, so it's 75 or more. Find an estimate for the percentage of the 250 students, total 250 है, who were awarded a distinction. अच्छा, 75 से ज़्यादा marks होने चाहिए. Now let's go to the table. अब table में आपके पास क्या है? We don't have 75 there. यहाँ पे जो लिमिट है, यहाँ पे 70 to 80 एक आ रही है. एक जो क्लास आपके पास आ रही है 70 to 80. अब हमें नहीं पता 70 to 80 क्लास में जो 60 लोग हैं उसमें से कितने 75 से ज्यादा होंगे, कितने से कम होंगे. So what we do here is we basically will have to do estimation. यहाँ पे आपको estimate करना पड़ेगा. किस तरह से estimate करेंगे? 75 is right in the middle. 75 is right in the middle. ठीक है, 70 और 80 का मिड पॉइंट 75 है. आपको देखना है कि 75 से ऊपर कितने लोग हैं. अच्छा देखें, जो 80 से 100 वाले लोग हैं ये तो सारे के सारे 75 से ऊपर हैं, right? All of these 42 people are above 75, so that is not a problem. They're all good. They satisfy our condition. लेकिन इन 60 में से कितनों के मार्क्स 75 से ऊपर होंगे? We don't know that. हम क्या करते हैं, इसको हम एस्टिमेट करते हैं. किस तरह से? 70 से 100 के दरमियान में 60 लोग आ रहे हैं, तो अगर हम मिड पॉइंट पे काट कर लें 75 से 80 तक, हम क्या कह सकते हैं? These are going to be 30 people, half of 60, right? 75 से 80 इसका half interval बनता है, तो half interval में कितने लोग होंगे? 30 लोग. तो basically above 75 जो आपका total बन गया वो कितना बन गया? 30 plus 42, and that's going to be 72. Okay, so above 75 कितने लोगों के मार्क्स हैं? 30 plus 42, आपके पास कितने लोग आ गए? 72 students. They satisfy your condition. ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है. 72 out of how many? 72 out of 250. Let's calculate that percentage and let's see what that gives us. 72 over 250 into 100%. Let's see what that gives us. 72 divided by 250. That is 28.8%. And that's your final result here, 28.8%.
ठीक है? All right, let's move on. Question number 3. Now it's graphs of functions. We have to complete the table for y equals x cube over 2 minus 3x minus 1. ये उसने एक फंक्शन दिया, आपने टेबल कंप्लीट करना है. Pretty straightforward. आपने वैल्यूज इनपुट करनी है. एक ही वैल्यू x की आपने इनपुट करनी है उसके अंदर -3. Let's see what that gives us. Minus 27 over 2 minus 3 into 3. That's plus 9 minus 1. I'm getting minus 5.5 here for this value. So this is minus 5.5. Okay, now we've got to draw the graph of this function. The upper function दिया हुआ था, graph draw करना है. We've got the values in the grid. वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम. We've got the values in the grid. आपने इनका graph draw कर लेना है. Let's do that. -3 and minus 5.5. Let's plot that point. -3 and minus 5.5. That point is going to be somewhere here. ये आपके पास एक point आ गया. So then we have -2 and 1. -2 and 1, that's here. -1 and 1.5. -1, we've got 1.5. That's going to be here. At 0, we've got -1. At 1, we've got -3.5. At 1, we've got -3.5. That is going to be here. At 2, we've got -3. That is right here. And then 3 पे, we've got 3.5. And that's right here. ये आपको curve draw करनी है. आपने points सारे plot कर लिए. So you'll get at least 1 mark for plotting the points correctly. And you've got to join this, join these points. Remember, it's a cubic curve. The cubic curve के आपको general एक shape का थोड़ा सा idea होना चाहिए. That will help. तो cubic shapes या तो इस तरह की होती है, या इस तरह की होती है, या कभी ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है. ये 4 possible shapes होती हैं cubic graphs के. Anyway, let's draw this now. Let's draw a graph through these points. ये आपको free hand draw करना है. Straight lines बिल्कुल नहीं बनानी यहाँ पे, so it's going to take a few iterations, and that's okay. That's why you should be doing this using a pencil. Lead pencil से आपने करना है, so that you can erase if you end up doing something wrong. अगर आपकी curve सही नहीं बन रही तो आपने उसको erase करके दोबारा से एक दफा draw कर लें. Okay, so let's try this here. Okay, so this is what the curve is roughly going to look like. ठीक है, so it looks fairly smooth. So अपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें coordinates नहीं बन रहे. It should be free hand drawing. That's what it should look like, and that's a graph. That's your 3 marks. Let's move on. Now it says use your graph to explain. Can you just change this pen size again? Yeah. So you've got to use your graph to explain why x cubed minus 6x minus 2 equals 6 has only one solution. अच्छा, जब भी आपने ग्राफ यूज करना है, आपने देखना है आपने ग्राफ ड्रॉ किसका किया है. आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, आपने ग्राफ ड्रॉ किया है इस फंक्शन का. It's x cube over 2 minus 3x minus 1. This is the function that you have drawn. उसने जो यहाँ पे दिया हुआ है, it's not that same function. Now let me just write that here again. उसने क्या दिया हुआ था? उसने दिया हुआ था y equals x cube over 2 minus 3x minus 1. Just confirm again. Yeah. So this is the function that's given there. आपने क्या करना है, ये जो उसने इक्वेशन दी हुई है, इसके एक साइड के ऊपर किसी तरह से ये फॉर्म ले आनी है. Now, if you think about it, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा?
लेफ्ट साइड के ऊपर you'll get x cube over 2 minus 6x over 2 divide by 2 कर रहे हैं ना पूरी इक्वेशन को 6x over 2 क्या हो जाएगा that's going to be 3x 2 over 2 that's going to be minus 1 on the right side you got 6 over 2 and that's going to give you 3 so basically आपने देखना है कि एक साइड जो है ग्राफ की this is what I'm doing I'm dividing the whole equation by 2 आपने क्या करना है एक साइड को आपने उस ग्राफ के इक्विवेलेंट बना देना जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया so you've got that here and now we basically have these two functions one function is y equals x cube over 2 minus 3x minus 1 ये एक फंक्शन आ गया आपके पास ये एक ग्राफ आ गया जो आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ऊपर दूसरा आपके पास ग्राफ क्या आया जो राइट साइड पे आ रहा है this is y equals 3 so basically what you've got to do now is you've got to draw the graph draw the line y equals 3 on the graph on the grid और उसको आपने देखना है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है आपके ग्राफ okay yes that's very good that's what you got to do y equals this graph you've already drawn ये आपने ग्राफ ऑलरेडी बना लिया राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है y equals 3 आपने देखना है ये दोनों इक्वल कब हैं तो बेसिकली दोनों के ग्राफ्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं y equals 3 line remember y equals something lines like these are horizontal lines ये आपकी horizontal lines होती हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y equals 3 के ऊपर एक horizontal line बना देंगे this is y equals 3 this is y equals 3 so y equals 3 के ऊपर we just have a horizontal line like this again you should be using a ruler for this it's going to look something like this ये आपके पास y equals 3 line आ गई you see it only intersects the graph at one point and that's this point here ये आपको सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है तो आपने क्या लिखना है वहां पे उसने कहा है use your graph to explain why this equation has only one solution तो आपको लिखना पड़ेगा आपको क्या लिखना पड़ेगा इसे कौन आपने क्या रीजनिंग है आपकी जो आप दिमाग में क्या सोच रहे हो इसे the line y equals 3 that you've drawn there it only intersects the curve that you've drawn above at one point. Since this line only intersects the curve at one point, therefore there is only one solution. So that's the reasoning that we've got for this. All right, let's move on. Now, part D, line L passes through the points 1, 1 and minus 2, minus 1. So this is some line L that passes through these points. On the grid, draw line L. अच्छा अब आपको कोई इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है कोई ग्रेडियंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है यू गॉट 2 पॉइंट्स बस आपने दो पॉइंट्स आपने ड्रॉ करने हैं प्लॉट करने हैं उनको ज्वाइन कर देना है दैट्स ऑल यू गॉट टू डू देयर ओके सो लेट्स डू दैट इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 1 1 दैट इज गोइंग टू बी हियर एंड minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 that point is right here इनके थ्रू आपने क्या करना है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है we change the color you got this point here and you got this point here ये दो पॉइंट्स आ गए इनके थ्रू अपन लाइन ड्रॉ कर देनी है see if this works so it's gonna work yeah let's try this okay so this is what your line is going to look like you should be drawing this more accurately दोनों पॉइंट से precisely उस तरह से पास कर रहे हो yeah so that's better this is how this line is going to look like ये आपकी लाइन है ये आपने लाइन ड्रॉ करनी थी वहां पे दिस इज लाइन L okay so that's one mark let's move on now it says work out the gradient of line L now you don't really have to use graph for this आपके पास दो पॉइंट्स हैं ऐसे ग्रेडियंट निकाल लेते हैं y2 minus y1 और x2 minus x1 यहाँ पे लिख लेते हैं if you want this is x1 this is y1
This is x2, this is y2. y2 minus y1, so that's minus 1 divided by x2, which is -2, minus x1, which is -1. Let's see what that gives us. -2 over -3, and that is 2 over 3. Minus minus cancel, okay. The result is 2 over 3. That's the gradient of the sign. Okay. Find the x coordinates of the points where the line L intersects the curve y equals this. Yeah, आपने x coordinate find करने इन points के. Now you already have drawn both the graphs, right? All you've got to do is अपने graph पे जाके वो x coordinates देख लेने हैं जहाँ पे वो intersect कर रहे हैं. ठीक है? So let's figure them out. You got one point here. ये x coordinate आ गया. You can read that. This is minus 2.6 for me. This is minus 2.6. And the another point that we've got is we have just क्या कहा था यहाँ पे उसने? Yeah, so we got 3 values, right? So we got 1 point here. ये point क्या आ रहा है हमारे पास? This is minus 0.3. And this is another value that we've got. This is between 2.9 and 3. So I'll say this is 2.95. Yeah, बस 3 values आ रही हैं. So this you'll have to do this from your graph. जो आपके graph पे points आ रहे हैं, आपने वो लिखना है. So I'm getting minus 2.6. So this is minus 2.6. And then I've got minus 0.3. Minus 0.3. And finally, I've got 2.95. These are the points that we were looking for. ये आपने यहाँ पे लिखना था. ठीक है? All right, let's move on. Okay, so now we've got sequences. Here are the first 3 patterns in a sequence made from counters. We've got these first 3 patterns. We have to first complete the table for the patterns in the sequence. Yeah, आपने pattern complete table complete करना है, patterns बनाने की जरूरत नहीं है. Now there are 2 ways of thinking about this. You can either look at the patterns and see कि अच्छा वो pattern किस तरह से continue होगा. So basically 2 counters ऊपर add हो जाएंगे, 2 counters नीचे add हो जाएंगे, एक counter right वाले counters तो वैसे ही रहेंगे. तो basically 2 counters add होते जा रहे हैं. तो 4 counters total add हो जाएंगे. That's one way to think about this. कि last number के अंदर 4 counters add हो गए. So the next number should be 20 after this. Or you could just think of this pattern. आप यहाँ पे नजर आ रहे table के अंदर 8, 12, the difference is 4, 12 to 16, the difference is 4. So it's constant difference. It's a linear sequence. आप directly लिख सकते हो, okay, next numbers क्या होने चाहिए? It should be 20 and then 24. Okay, so equal distance बन रहा. Now it says find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. Nth term का formula आपने निकालना है यहाँ पे. Now you see it's a linear sequence because the difference is constant. सारे equal differences हैं. 4 का difference बन रहा है. The first difference is constant. The first difference constant होता है. It's a linear sequence. उसका हमारे पास एक formula होता है. वो formula use कर सकते हैं. There's actually a way to do that mentally as well, but you can just use the formula. That's going to be easier. A plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 times d, where a is the first term and d is the difference. What's the first term? The first term is 8 plus n minus 1 times the difference. What's the difference here? 4. So it's going to be n minus 1 times 4. So simplify kar lein. That gives us 8 plus 4n minus 4, and that is 4n plus 4. That's the nth term for you. 4n plus 4. ये आपके पास nth term formula आ गया उसका. Okay. अच्छा. Now it says Jamal has 150 counters. Counters का क्या मतलब है? Counters basically जो छोटे circles हैं इनको counters कह रहे हैं. ठीक है? So Jamal has 150 counters. He uses these counters to make the largest pattern possible. Pattern P, उस pattern को उसने pattern P कहा है. So basically this is pattern 1, pattern 2, pattern 3, and so on. Until somewhere we've got pattern number P. ठीक है? Number of counters उसके पास 150 है यहाँ पे. Maximum number. अब हो सकता है 150 का बने या उससे कम का बने. हमें देखना पड़ेगा कि largest pattern जो है
उसका नंबर क्या है, पैटर्न नंबर क्या है, वो फिगर आउट करना. Now, how do you think about this? You see, you've got the nth term formula now. That's 4n plus 4. That is the nth term formula that you've got. 4n plus 4 आपको क्या बता रहे हैं? ये आपको number of counters बता रहे हैं. Number of counters बता रहे हैं 4n plus 4. Right? So, for example, n की value 1 जब होती है, तो counter कितने होते हैं? 4 into 1 plus 4, that's going to be 8. When की value 1 है, तो number of counters कितने आते हैं आपके पास? 4 plus 4, that's 8. That's this number. जब n की वैल्यू 2 इनपुट करते हैं तो आपके पास 12 आ जाता है. n की वैल्यू 3 इनपुट करते हैं 16 आ जाता है. अब उसने कहा है कितने काउंटर्स है? 150 काउंटर्स है. अब 150 काउंटर्स है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन इक्वेट दिस 4n plus 4 to 150. क्या आपके नंबर ऑफ काउंटर्स 50 होने चाहिए? तो n की वैल्यू आपके पास क्या आती है? राइट, वो n बेसिकली आपका ये p होगा. ये आपको फिगर आउट करना. ठीक है, अच्छा, लेट्स फिगर दिस आउट. We get 4n equals 146. या आपके पास n की वैल्यू आती है यहाँ से 146 over 4, and that actually gives us 36.5. Okay, अब 36.5 पैटर्न तो कोई नहीं हो सकता ना, कोई डेसिमल्स में तो पैटर्न आ नहीं सकता. अब मसला क्या हो रहा है? 150 जो है, it's not actually going to be anywhere in this pattern. इस पैटर्न के अंदर 150 नंबर जो है वो आ नहीं रहा, क्योंकि 154 का मल्टीपल नहीं है. तो इस पैटर्न में देखें सारे 4 के मल्टीपल्स हैं. तो एक नंबर आपका होगा 148, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 152. तो आपके पास 150 काउंटर्स हैं टोटल. तो 152 तो आप कर नहीं सकते. तो बेसिकली 148 आप उसमें से यूज करके जो लार्जेस्ट पैटर्न आपका बन रहा है वो कितना होगा? 36.5 से जो छोटा नंबर है, that's going to be 36. That's the maximum pattern number that you can have here. That's 36. ये आपके पास n की वैल्यू आती है यहाँ पे. n बेसिकली यहाँ पे n की जगह पे p लिखना है, तो आप क्या कहोगे? p की वैल्यू क्या है? दैट इज 36. Okay, excuse me. Again, why are we using 36 here? 150 maximum number of counters, right? उससे वो 36.5 नंबर मिल रहा है आपको. 36.5 तो हो नहीं सकता, तो उससे छोटा नंबर जो है 36, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, अच्छा. Now it says the fourth term in a different sequence, so it's not the same sequence, it's something else. Okay. Walaikum assalam, Abdullah. Abdullah, my recommendation would be that you do a couple of yearly papers every day, मतलब एक दो कर लें, और उनमें आप देखें कि आपके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, किन टॉपिक्स में आपके मार्क्स कट रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करें हर रोज. उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिकल प्रैक्टिस कर लें, राइट. एंड देन द नेक्स्ट डे अगेन यू डू अ कपल ऑफ पेपर्स, में आप देखें आपके मार्क्स ज्यादा कहाँ पे कट रहे हैं, और फिर उन टॉपिक्स की दोबारा से टॉपिकल प्रैक्टिस, उनके मुश्किल क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट कर लें. देन यू कीप रिपीटिंग दैट लूप. On the last day, just revise all concepts quickly, and that should help. Okay, that's my recommendation, but of course everybody has a different way of doing it, but that's what I would do if I was in your situation. Okay, let's move on. The fourth term in a different sequence is 26. The sequence is linear, and the eighth term is 2. Again, it's a linear sequence. It's a linear sequence, यानी कि difference constant है. ठीक है, अच्छा. फोर्थ टर्म जो है वो 26 है. Let's think about it. So we've got fourth term, that's 26, and then we have the eighth term, that is 2. Find the first term of the sequence. Okay, now there could be multiple ways of thinking about it again. एक तो आप इसको मेंटली सोच सकते हो. किस तरह से सोच सकते हैं? आप देखें, फोर्थ टर्म से लेकर एट्थ टर्म तक आपको क्या करना है? कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1, 5th, 6th, 7th एंड 8th.
बेसिकली आपके पास एक नंबर यहाँ पर होगा, फिर एक और नंबर होगा, फिर एक और नंबर होगा, और उसके बाद आपके पास ये नंबर होगा। तो बेसिकली जो भी डिफरेंस है वो 4 टाइम्स आपका आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, वन वे टू थिंक अबाउट दिस मेंटली इज, आप देखें डिफरेंस आपका क्या बनता है। 2 में से 26 माइनस किया, बिकॉज 2 बाद में आ रहे हैं, पहले 26 आ रहे हैं, और दिमाग में 4 डिफरेंसेस आने चाहिए, 4 टाइम डिफरेंस आने चाहिए, 5th 6th 7th 8th, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, एंड दैट्स गोना गिव यू -6। डिफरेंस आपका -6 आ गया, -6 डिफरेंस आ गया, इसका मतलब है पीछे को जाने के लिए आपने +6 करना है, 32 आएगा, फिर 38 आएगा, और फिर आपके पास 44 आ जाएगा। 44 should be the first term. That's one way to think about this mentally. Now, again, it's not something that everybody would be comfortable with. सब लोग शायद इस तरह नहीं सोच सके, but that's for the better candidates. अगर आप इस तरह दिमाग में सोच सकते हैं, that's going to be good. If you can't do that, and that's, I understand, that's going to be most of the people. What do we do in that case? Remember the term formula that we've got? Term formula क्या था हमारे पास? It's a linear sequence, remember? So formula क्या होता है उसका? A plus n minus 1 times d. That's the formula that we've got. अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, डिफरेंस चाहिए होता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने 2 टर्म्स बता दिए आपको, 2 टर्म्स बता दिए, 4th टर्म बता दिया, और उसने 26th टर्म बता दिया। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? 4th टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? A plus n minus 1, that's going to be 4 minus 1 times the difference. उसने बता दिया कि जो 4th टर्म है ना, that is 26, तो ये 26 का इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो 8th टर्म है, that is 2, 8th term that has to be 2. So अगर हम n की जगह वहां पे 8 डाल दें, a plus 8 minus 1 times the difference, ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो 2 के इक्वल होनी चाहिए। या आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई, you can solve these equations simultaneously and you'll get the values of a and d from this. ठीक है, let's do that. We've got a plus 3 times d, that equals 26, and from the other equation we've got 2 equals a plus 7 times d. इनको सॉल्व कर लें। आपके पास, आपको a चाहिए ना, फर्स्ट टर्म चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, वो आप फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो वन वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी, अच्छा उसने नेक्स्ट पार्ट में देखें, उसने nth टर्म फॉर्मूला भी पूछा आपसे, तो आपको बेसिकली डिफरेंस भी चाहिए होगा इवेंचुअली, तो हम d और a दोनों फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन either use elimination or substitution, whatever you're comfortable with. Let's do substitution. 26 minus 3d. From the second equation, we've got a equals 2 minus 7d. इन दोनों को एक इक्वेट कर सकते हैं, राइट? a equals this and a equals this. हमारे पास क्या बन गया? 26 minus 3 times d, that equals 2 minus 7d. And that's going to give me 4d equals minus 24. Difference equals -6. Difference की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म निकाल लिया। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? a equals 26, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें कर दें, इसमें कर दें, डजंट रियली मैटर, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। 26 minus 3 times -6, and that's going to give me 26 plus 18, which is 44. This value should be 44. ठीक है? Now it is a slightly long process, but if you can't do it mentally, then that's the formal way of thinking about this. या आपके पास 44 रिजल्ट आ गया, that's the first term, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। Now once you've got the value of a and the value of d, first term और डिफरेंस दोनों आ गए आपके पास, उसने कहा nth term का फॉर्मूला लिख दे। nth term क्या होती है? अगेन a plus n minus 1 times the difference, इसमें वैल्यूज इनपुट कर दें, a is 44 plus n minus 1 times the difference is -6, we evaluated that here, वो input कर दें। Let's simplify this. What do we get? We get 44 minus 6n plus 6, and that is 38 minus 6n, and that's your nth term formula for this. Okay, sorry, it should be 50. 44 plus 6, that is 50.
50 minus 6n, that's your final result. Let's write that down here. 50 minus 6n, that's the nth term formula. Okay. Abdullah, I basically teach in Lahore. I teach at LGS JT, ISL, and LGS 55 main. But I mainly teach A levels actually. O levels I used to teach a few years ago, but not anymore. Schools mein nahi padhata, but I just teach here. O levels, schools mein I mainly teach A levels. Okay, so that's why actually most of the content that you'll find in the channel is on A levels, but I've got some content on some of the major O-level topics. You'll find some links for that in the description below. So that should be helpful. Okay, let's have a look at the next part. So that was part 2 here. Question number 5. Okay, that's question number 4. Let's move on to the next one now. Question number 5, that's part A. The mass of 4 cards and 3 envelopes is 85 grams, and the mass of 2 cards and 5 envelopes is 67 grams. ये उसने आपको कुछ information दी हुई है. It says form a pair of simultaneous equations and solve them to find the mass of 1 card and the mass of 1 envelope. अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? इनको हम जो हमने फाइंड करना है, इनको किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं. Mass of 1 card फाइंड करना है. That's one thing that you got to figure out. और आपको क्या करना है? Mass of 1 envelope फाइंड करना है. Okay. कार्ड के मास को आप कुछ किस चीज से रिप्रेजेंट कर दें, लेट्स कॉल दैट x. एनवेलप के मास को किस चीज से रिप्रेजेंट कर दें, लेट्स कॉल दैट y. ओके, अब देखें 4 कार्ड्स हैं, तो उनका टोटल मास कितना हो जाएगा? इसी मास के कार्ड को हम कितना, कार्ड के मास को हम कितना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिस इज बेसिकली x. एनवेलप्स के मास को कितना कह रहे हैं? एनवेलप्स के मास को हम कह रहे हैं y. So if there are 4 cards, उनका टोटल मास कितना हो जाएगा? It's going to be 4 times x. 3 envelopes, उनका टोटल मास कितना हो जाएगा? 3 times y. इनको अगर ऐड कर लें हम, इनका सम कर लें, what's the total? The total should be 85. That turns out 85. Okay. Similarly, it says the mass of 2 cards, that means 2 times x, and 5 envelopes, that means 5 times y. That should equal 67. ये आपके पास 2 equations आ गई, ठीक है? Now you just have to solve them simultaneously, and that's going to give you the result. Let's do that. 4x plus 3y equals 85. 2x plus 5y equals 67. Now you could use either elimination or substitution, whatever you prefer. Elimination, agar aapko achhi aati hai, that's actually much quicker in most situations. Mein error ke chances bhi kam hote hain. So I'm going to do it that way. आप substitution से करना चाहें वो भी कर सकते हैं. Elimination से करने का क्या तरीका होएगा? Oops, sorry about that. Elimination से करने का क्या तरीका होएगा? अब देखें, this is 4x, this is 2x. What we could do here is, second equation को हम 2 से multiply कर दें, तो हमारे पास 4x आ जाएगा वहाँ पे. 4x plus 10y equals 67 times 2. What is that going to be? 134. ये हमारे पास 2 equations आ गए, ठीक है? Now उसका फायदा क्या होगा? 4x से 2 से मल्टीप्लाई करने का, हमारे पास 4x दोनों में कॉमन आ गए. Now we can just subtract one equation from the other. इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं. We have 4x plus 3y equals 85, and the other one is 4x plus 10y equals 134. Let's subtract one from the other. आप कोई भी ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी नीचे लिख सकते हैं, doesn't really matter. This gets cancelled. We've got minus 7y equals 134 minus 85. Let me just do that calculation. It's 49. Minus 49 आ गया. Y equals 49 over 7. That is 7. ठीक है. अच्छा, अब आपको corresponding value of x find करनी है. किसी भी equation के अंदर input कर दें.
इसमें कर दें या इसमें कर दें, that's your choice. I'm going to do it here in this equation just randomly. So that gives me 4 into x plus 10 times 7, that equals 134. 4x equals 134 minus 70, that is 64, and x is going to be 64 over 4, which I assume is 16. x की वैल्यू आपके पास यहाँ से 16 आ गई. ये प्रोसेस शो करना बहुत जरूरी है, आपने वर्किंग स्किप नहीं करनी. जिस तरह आपको पता है कि कैलकुलेटर से कर सकते हैं, उसका एग्जामिनर को भी पता है. तो अगर आप वर्किंग नहीं शो करेंगे, एग्जामिनर विल assume that you have done this using a calculator and they will not give you marks for that. ठीक है, तो आपको वर्किंग शो करनी है, वर्किंग के मार्क्स हैं. अगर आप मेथड नहीं शो करेंगे, आपको आंसर लिखने के मार्क्स भी नहीं देगा, बिकॉज आंसर के मार्क्स आपके मेथड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके, सो मेक श्योर दैट यू शो द मेथड क्लियरली. अगर आप मेथड नहीं शो करेंगे, 0 मिलेगा उसका. ठीक है सर, तो ये आपने ध्यान रखना है. अच्छा, अब कार्ड को आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, so keep that in mind. तो कार्ड के आगे आप 16 लिख देंगे, और y आपने एनवेलप के लिए यूज किया था, so that's going to be 7. You've got 7 grams here. So you've got the masses of both of them. Okay, let's move on. It says factorize x square minus 25. That's pretty straightforward. 25 can be written as 5 square, and that gives us x plus 5 into x minus 5. That's our factorized form. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, rearrange the formula. R equals 2t over t minus 5 to make t the subject. T को subject बनाना है. So what we can do is we can just multiply this denominator on the other side. देखते हैं इससे क्या होता है. So we've got r into t minus 5, that equals 2 times t. That gives us rt minus 5r equals 2 times t. Now since you want to make t the subject, आपने t वाली terms एक side पे कर लेनी है, and you'll take everything else on the other side. ठीक है, so we've got rt here minus 2t. We've got t terms on one side, on the other side we've got 5 times r. Let's take t common now on the left side, and that gives us t into r minus 2, that equals 5 times r, and then t equals 5r over r minus 2. You made t the subject, and that's all that you've got to do here. हमने t को subject बनाना, तो ये हमारे पास आ गया. Let's write that down here. That's 5r over r minus 2. That's your final result. ठीक है, so that's pretty easy, 3 marks. Let's move on. Now it says express as a single fraction in its simplest form. This expression, okay. आपने LCM लेना है simply, right? LCM यहाँ पे कैसे लेंगे? दोनों fractions को multiply कर दें, दोनों denominators को multiply कर दें. So we have x minus 5 multiplied by 2x plus 1. And then what we do is we multiply this denominator with that, this denominator with that. Keep in mind, in the middle, we've got a negative sign. वो अपने ध्यान रखना है इसका. So what do we get then? 4 into 2x plus 1 minus 3 into x minus 5. Now we have to simplify this, remember? आपको simplify करना पड़ेगा इसको. इसको simplify करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? We have 8x plus 4 in the numerator minus 3x plus 15. Simplify करने का मतलब है ये brackets आपने eliminate करनी है. ये factorized form है. Currently denominator में factorized form है. वैसे denominator का इतना मसला नहीं होता, लेकिन उसने कहा है simplest form, तो it's better to just simplify the denominator as well. ठीक है, दोनों simplify कर दें. Denominator को simplify करेंगे आपको क्या आ जाएगा? 2x square plus x minus 10x minus 5. Okay, let's write down what we get after this. 8x minus 3x, that's going to be 5x, plus 4 plus 15, that's plus 19. In the denominator, we have 2x square minus 9x minus 5. That's your final result. Single fraction in simplified form. या आप यहाँ पे जाके लिख देंगे 5x plus 19 divided by
2x square minus 9x minus 5. That's what we get. Okay. So that again, that's 3 marks. Let's move on to the next question. That's question number 6, and it has probability. Asma has this fair 8-sided spinner. She spins the spinner once. Find the probability that the score she gets is 6. Okay. So it's a fair spinner. Fair का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास possible outcomes हैं, उनकी probabilities equal है. ठीक है? So you got how many possible outcomes? You've got 8 possible. No, so it's an 8-sided spinner. लेकिन अगर आप numbers देखें वहां पे कुछ numbers repeat भी हो रहे हैं. ठीक है? So you've got to keep that in mind. सबसे पहले उसने कहा find the probability that the score is 6. अच्छा 6 देखें 8 में से कितना दफा आ रहा है? There's only 1 6 there. ठीक है? So 1 out of 8 इसकी probability हो जाएगी. You say this is 1/8. ठीक है? 6 आपने देखना अगर 2 दफा आ रहा होता that would have been 2/8, right? So you've got to be careful about that. So that's 1/8. Now find the probability that the score is not 2. 2 के अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है. Now there are two ways of thinking about this. या तो आप 2 की probability निकाल लें, 1 में से माइनस कर दें फिर, या आप 2 के अलावा बाकी सारे काउंट कर लें. 2 के अलावा you've got 1 2 3 4 5. 5 numbers हैं जहां पे 2 नहीं आ रहा. So basically 5 regions हैं जहां पे 2 नहीं आ रहा out of 8. So not 2 की probability कितनी हो जाएगी? That's going to be 5/8. Okay, that's 1 mark as well. Now it says Asma spins the spinner twice. Find the probability that she scores 2 2s. Okay. 2 दफा spin किए, दोनों दफा 2 आ जाए. इसका क्या मतलब है? You have first time 2 आ जाए, and you've got second 2. First time भी 2 आए और second time भी 2 आए. ठीक है? First time 2 आने की probability कितनी है? How many 2s do we have? 1 2 3. There are 3 2s. 2 की probability 3/8 है. So we have 3/8 for this. Second time 2 आने की क्या probability है? Again, that's going to be 3/8. And there's an and between them. Right? दोनों दफा 2 आना चाहिए. And जब आता है, what do? We multiply them. दोनों को multiply कर देंगे. We get 9/64, and that's your probability. ठीक है? Okay. Now, Leon has 7 red counters, 6 green counters, and 3 white counters. Okay, so you've got 7 red, 6 green, and 3 white. He takes 2 counters at random without replacement. That's very important. आपने replace नहीं किया. Find the probability that the 2 counters are the same color. Okay. अच्छा, total देख लें कितने आपके पास? 7 6 3, so that's 16 in total. Total counters आपके पास 16 है. ठीक है? Now, we want to find the probability that the 2 counters that he takes are the same color. अच्छा, अब same color के पे क्या-क्या possibilities हो सकती हैं? Same color का मतलब है या तो दोनों red हो. That's one possibility. Both are red. Another possibility is that both are green. And another possibility is that both are white. अच्छा, आप directly इस तरह से सोच सकते हैं if you want. Or if you want, you can also draw a tree diagram for this. If you're more comfortable that way, वो भी कर सकते हैं. Both are okay. लेकिन अगर वैसे सोचते हैं, लेकिन 2 red counters की क्या probability है? अच्छा, first time red आए, what's the probability for that? There are 7 red counters, right? Probability of getting red the first time, that's going to be 7/16. Okay, 7 out of 16. That's the probability of getting the red counter the first time. Now, what's the probability of getting a red counter the second time as well? Now, we've got to be a bit careful here. Second time आपकी probability same नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि this is without replacement. तो एक red counter तो आपने निकाल लिया. बाकी कितने बचे? 6. Out of how many? 16 total थे पहले. अब 15 रह गए. So this is going to be 6/15 now. ठीक है? अच्छा, अब दोनों अगर green हो, what about that? Again, green की probability कितनी है? 6/16 the first time, and then once you've taken out one green counter already, second time green की क्या probability हो जाएगी? 5/15.
Then you got 2 white. फर्स्ट टाइम वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/16. सेकेंड टाइम वाइट की कितनी हो जाएगी 2/15. ठीक है. बट नाउ इट कैन बी आइदर दिस केस और दिस केस और दिस केस. इन तीनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल है. तो दिस एन और बिटवीन दीज पॉसिबिलिटीज. या तो ये फर्स्ट होएगा या ये सेकंड होएगा या ये थर्ड होएगा. तो क्या करेंगे इन तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे. इनकी प्रोबेबिलिटीज को जो टोटल रिजल्ट आ रहा होगा इनको ऐड कर लेंगे. विल इवैल्यूएट दिस होल थिंग that's going to give us the result. ठीक है. आप पूरा का पूरा कैलकुलेटर में डाल सकते हैं if you want, or you can do it step by step just to make sure that you're not doing any careless errors, but that's going to give you the final result. ठीक है. अच्छा, let's evaluate this. I'm going to do it directly on my calculator. 7/16 into 6/15 plus 6 divided by 16 into 5 divided by 15 plus 3/16 into 2/15. So my calculator is giving me 13/40, and that's your final result here. 13/40. That's the probability of getting the two counters that have the same color. Getting two counters that have the same color. Okay. All right. Question number 7. Okay, so this looks like vectors. P is the point -5, 2. Q is the point 3, 7. And the vector QR is -4 and 6. Find the coordinates of the midpoint of PQ. That's the first thing that you got to do. Midpoint find करना है. Midpoint का formula apply कर दें. -5 plus 3/2. This is x1, y1, x2, y2. So x1 plus y2 over 2. y1 plus y2 over 2. And that's going to give you the result. -2/2. That's going to be -1. And 9/2 is 4.5. ये आपके पास midpoint आ गया. अच्छा. Find the coordinates of the point R. All right. So how do we think about this now? You can either think of it using position vectors. फिर उस तरह सोच सकते हैं क्योंकि coordinates की corresponding vector form क्या होती है position vector, right? तो आप इस तरह लिख सकते हैं if you want. That's one way. आप कह सकते हैं QR is equal to OR, position vector of the second point, minus the position vector of the first point, OR minus OQ. This is one way of thinking about this. QR आपको पता है, that is -4, 6. OR आपको find करना है. OQ coordinates को अगर आप vector form में लिखते हैं, that's OQ, that's 3, 7. इससे आपके पास OR आ जाएगा. That's one way to think about this. ठीक है. उसको दूसरी साइड पे जाके प्लस कर दें. You could do it this way, or you could just think of it mentally. Vector form में आप देखें. Q आपके पास एक पॉइंट है. उसने क्या है Q से R पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो अगर उसको मैं यहाँ पे लिखूं, so you got this point Q here somewhere. Q से R पे जाने के लिए क्या करना है -4. So you got 3, 7 here, right? Q से R पे जाने के लिए 4 यूनिट्स आपने लेफ्ट पे जाना है. -4 आपने लेफ्ट 4 यूनिट लेफ्ट पे जाना. 6 वर्टिकल कंपोनेंट है. 6 यूनिट्स आपको ऊपर जाना है. So you can do it mentally like this. 6 यूनिट्स आपने ऊपर जाना है. तो आप क्या करो, आप 3 में से 4 माइनस कर दो. x कोऑर्डिनेट में से 4 माइनस कर दो. क्या आता है आपके पास -1. 7 में 6 ऐड कर दो. You get 13. You could write it like this as well. That's -130. ठीक है. तो वो मेंटली करने का तरीका है. ये भी कर सकते हैं. अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको यहाँ से करते हैं तो OR क्या हो जाता है, यहाँ से भी वही सेम आइडिया हो जाता है. OR would have been -4, 6 plus 3, 7, and that gives you -4 plus 3, that's -1. 6 plus 7 is 13. इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कोऑर्डिनेट्स वाली फॉर्म में लिख दो, तो वो बन जाता है -113. So you can do it either way. Okay. अच्छा. Now it says find QR का magnitude. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं. इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है. अगर आपके पास एक्स वाई एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y².
ये आपको फिगर आउट करना है, क्यू आर का मैग्नीट्यूड. सो ये से स्क्वायर रूट ऑफ -4 whole square plus 6 square, and that's going to give you the result. 16 plus 36, that's 52. 52 का स्क्वायर रूट कर लें, ये आपके पास क्या आ जाता है 7.21. So this turns out to be 7.21. That's the final result here. Okay, so that was 2 marks. Well, that's weird because that was pretty straightforward. So that's 7.21. That's the magnitude that we were looking for. Okay. Acha, part B. Now, part B says we have this OACB, that's a quadrilateral, and a point N, which is a point on AB. AB के ऊपर आपका एक point N आ रहा है. OA is given to be A, OB is B, OA is 2 times BC. अच्छा, OA is 2 times BC, तो that's helpful. इस तरह से कि अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, in fact we just do it directly. OA जो है वो 2 times BC है, यानी BC जो है that is half of OA. So we can write it like this. We can say this is going to be half A, right? This is A. अगर ये वेक्टर A है तो BC वेक्टर क्या हो जाना चाहिए, ये उसका हाफ होएगा, हाफ ऑफ A. ओके, अच्छा इसने और क्या बताया, इसने बताया BN और NA की रेशियो जो है that is 1:3. Now what does that mean? If you were to divide this line into two parts, BN आपका एक पार्ट है, NA आपका दूसरा पार्ट है. If this part is 1 part, the other part is going to be 3. Right? If that is 1, the lower part is going to be 3. ठीक है, ये इन दोनों की रेशियो है. Okay. Now it says find in terms of A and B in its simplest form the vector AB. सबसे पहले तो AB वेक्टर निकालना है. आप इसको फिगर से कर सकते हो if you want, या फिर आप इसको वैसे कर सकते हो पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके. AB क्या होता है, it's OB minus OA. उस तरह कर सकते हो, या फिगर से देख लें, पाथ फॉलो कर लें. जब डायग्राम होती है इट्स इजियर यूजिंग द फिगर. आपको क्या करना है, A से B पे पहुंचना है. तो आप कोई देख लें जो वेक्टर्स आपको पता है उस पाथ के ऊपर, डायग्राम के ऊपर. यू कैन गो फ्रॉम A to O एंड देन यू कैन गो फ्रॉम O to B. राइट, A से O पे चले जाएं, O से B पे चले जाएं. That's going to be AB. So that's another way to think about this. You say AO plus OB. A से O पे जाएंगे तो क्या होएगा, ये उसका ऑपोजिट है A का. That's going to be minus A plus OB. OB is just B. Your result is minus A plus B. इसको minus A plus B लिख दें, B minus A लिख दें, एक ही बात है. Doesn't make any difference. अच्छा, then it says NC. NC वेक्टर आपको फिगर आउट करना है. पॉइंट N से स्टार्ट करना है और पॉइंट C पे पहुंचना है. ठीक है, अच्छा. Now you have to find a path on the figure that takes you from N to C. So one way to think about this could be, you say, let's go from N to B. N से B पे चले जाएं. And then you go from B to C. अब BC तो हमें पता है, वो हमने पहले लिख लिया था, half A. NB हमें figure out करना है. Let's do that. Let's first break it down into 2 parts. We say NC is going to be NB plus BC. ये हमारे पास आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, पहले NB फाइंड कर लेते हैं. अच्छा, NB कैसे आएगा, साइड पे कर लेते हैं. Let's do it on this side here. NB vector. अब देखिए, if NB is 1, तो AN कितना है 3. यानी कि अगर इसके टोटल, तो अब क्या करें, इसको रेशियो यूज करें. टोटल पार्ट कितने, टोटल पार्ट्स कितने बन रहे हैं, 1 plus 3. टोटल पार्ट्स आपके पास 4 है. तो अगर टोटल 4 हो तो NB कितना होगा, NB होगा 1 out of 4 और AN कितना होगा 3 out of 4. तो बेसिकली यू कैन राइट इट लाइक दिस. यू कैन से NB जो है that is going to be 1/4 of the complete line. जो पूरी लाइन AB है आपकी, उसका 1/4 जो है वो AB होगा. राइट, उसने रेशियो दी थी ना 1:3. तो टोटल कितना है 4. 4 में से 1 पार्ट BN वाला पार्ट है और 3 पार्ट्स आपके नीचे वाला पार्ट है. तो NB
आपके पास वेक्टर क्या बन जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 1/4 ऑफ द वेक्टर ए बी उसने फर्स्ट पार्ट में आपसे निकलवा लिया, इसलिए वो क्या था? -a+b। ये क्या बन गया हमारे पास? -1/4a + 1/4b। ये आपके पास एन बी वेक्टर आ गया। अब इसको जाके यहाँ पे इनपुट कर दें ऊपर, एन बी की जगह वी गेट -1/4a + 1/4b। बी सी क्या है? बी सी वेक्टर आपको पता है, दैट्स हाफ ऑफ ओ ए, दैट्स गोइंग टू बी हाफ ए। क्या आप इवैल्यूएट कर लें, यू कैन सी व्हाट दैट टर्न्स आउट। सो बी वाली टर्म तो एक ही है, ए वाली टर्म्स को ऐड कर लें तो क्या आता है? -1/4 + 1/2। I think that's going to be +2/4 minus that. Yeah, so that's going to be 1/4a. 1/4 times a plus 1/4 times b. That's what your final result here turns out to be. इसको अगर आप 1/4 कॉमन लेकर लिखना चाहे लिख सकते हैं, इस तरह भी छोड़ दें, that's also fine. Your final result turns out to be 1/4 into a plus b, and that's your final result. ठीक है? That's the vector NC. Let's move on. Question number 8. So now this is mensuration. The curved surface area of a cone. अच्छा उसने बताया हुआ volume बताया हुआ, curved surface का formula दिया हुआ है. The diagram shows a paper cup in the shape of a cone. The diameter of the top of the cup is 7 centimeters. The diameter is given. Remember, it's not radius, it's the diameter. Radius इसका half होएगा, 3.5. You can write that here just to make sure you don't end up using 7 as radius. Volume of the cup is given, that is 110 centimeter cube. Show that the height of the cup H is 8.57. Correct 2 decimal places. Okay. वॉल्यूम बताया ना उसने आपको, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल टू 110. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिसने ऊपर बताया हुआ है. कोन का फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए, दैट्स इक्वल टू 110. व्हाट्स द रेडियस? रेडियस इज 3.5. तो यहाँ पे इनपुट कर दें, 3.5 होल स्क्वायर इनटू h, दैट इक्वल्स 110. यहाँ से बस h की वैल्यू आ जाएगी, h equals 110. अच्छा, इसमें आप ना उसने आपको कहा है शो करने का. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शो ऑल स्टेप्स. वर्किंग पूरी शो करनी है, वर्किंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी. जब उसने शो कहा होता है ना, कुछ प्रूव करने के लिए कहा होता है, आपको वर्किंग में एक भी स्टेप स्किप नहीं करना, बिकॉज इसमें सिर्फ मेथड के मार्क्स हैं आपके, राइट? तो आपको वर्किंग पूरी शो करनी है. दिस इज 10 times 3, या इसको लिखते हैं इस तरह से, पहले एज को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं. इट्स 10 times 3 and then divided by pi into 3.5 whole square. And then you can evaluate this from a calculator. 30 over 3.5 squared divided by pi. There seems to be something wrong because I'm not getting, yes, that was 110, not 10. Okay, so there was a careless error there. This is 110. So that should be 330. Yeah, so that gives me 8.57 to 2 decimal places. Okay, so that's your final result. ये आपने show करना. ठीक है, that's the first part. Now in the second part, it says calculate the slant height L centimeters of the cup. So slant height कैसे निकालें? We've got the height. So यहाँ पर diagram के ऊपर अगर देखें, so this calculation we've got to do a lot of times when we are dealing with cones. This is the height. Height आपको पता है? That's 8.57. We know this length. This is the radius. This is 3.5. L is basically hypotenuse. It's a right angle triangle. L आपका hypotenuse है, तो वो evaluate कर लेते हैं. L square equals 3.5 square plus 8.57 square, and that's going to give you the value of L. ठीक है, ये evaluate कर लें. 3.5 squared
plus 8.57 squared. Then you take square root of that, and that gives you 9.26 to 3 significant figures. 9.26. ठीक है, इसको आप ज्यादा लिख सकते हैं, ज्यादा significant figures लिख सकते हैं, इससे कम नहीं लिख सकते. ठीक है, so 9.26 is what you get from this. That was your slant height. अच्छा, now it says the cup is cut along the line OA. Okay, so along this line the cup is cut. It is opened out into a sector of a circle. Again, it happens, you must have seen this in past papers a lot. You skip multiple questions this time. Now it's open into a sector of a circle with center O. So basically, ये जो OA आपकी जो slant height थी वो क्या बन जाती है यहाँ पे? Sector का radius बन गई है. Okay, center O and the sector angle X. Angle जो है sector का, that is X. We've got to calculate the angle X. Angle X आपको evaluate करना है यहाँ पे. Now, how can we think about this? Angle X हमें evaluate करना है. Let's see what we can do here. So this is 4 marks. Okay. So the cone is opened and it becomes a sector. What we could do is we could use the curved surface area of the cone. That is going to be helpful. Why? Because you see, आपके पास अब क्या क्या information है? Let's actually represent that here. हमारे पास radius है cone का, that is 3.5. We also know the slant height, that is 9.26. ये information है हमारे पास. Now remember, when the cone is cut and it's opened to make the sector, ये जो सारा इसका curved part है, ये जो curved surface है, think about it. When it's opened, what does this curved surface become? ये पूरा curved surface जब ये आपकी जब cone open होगी, ये आपके पास ये पूरा sector का area बन जाएगा. So basically, curved surface area of the cone, that becomes the area of the sector when this thing is open. Okay, let me write that down here. And this is something that happens every time you do something like this. आप cone को जब भी open करते हो, तो आपके पास जो sector बनता है, उसमें curved surface area of the cone होता है, that is equal to the area of the sector. ये दोनों equal होंगे एक दूसरे. ठीक है? Now, what's the formula for the curved surface area of the cone? उसने आपको formula sheet में भी दिया होता है. उसने यहाँ पे question के अंदर भी आपको बताया है. उसने formula sheet यहाँ पे नहीं होती, sorry. उसने आपको question के अंदर बताया है pi RL. Okay? उसने आपको बताया है. That's what you got. You should remember this as well. आपको याद भी होना चाहिए. Although ये हमेशा बताएगा question के अंदर, जब भी आपको cone के formulas बताता है, pyramid के formulas बताता है, sphere के formulas बताता है, ये 3 formulas आपको बताता है वो. बाकी आपको याद होने चाहिए. Let's use that. Pi RL, that equals area of the sector. Area of sector क्या होता है? Theta over 360 into pi r square. Theta क्या है यहाँ पे? X. Radius क्या है? Sector का radius different है, remember? Let me actually represent it using a capital R, just differentiate between the radius of the cone and the sector. इसको मैं capital R से represent कर रहा हूँ. इस radius की value कितनी है? That is 9.26. Right? OA है ना ये भी. तो slant height जो वहां पे थी, वो यहाँ पे radius बन गई है. This is also 9.26. For the cone, that was slant height. For the sector, this is the radius. So we say pi RL, that equals theta over 360 into pi r squared. Now we just have to input values. हमारे पास x आ जाएगा. ठीक है? अच्छा. Pi RL, let's input values here. Pi into the radius. Radius is 3.5. Radius of the cone, that is 3.5. Slant height, that is 9.26. That equals theta. Theta की जगह यहाँ पे x है. X over 360 into pi. Radius का square, radius of the sector, that is 9.26.
and square of that. What do we do now? Pi and pi get cancelled. What are we left with? X equals 3.5 into 9.26 divided by, in fact 360 भी ऊपर आ रहा होगा, into 360 जाके वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, divided by 9.26 whole squared. ये आपके पास आ गया. Pi और pi वैसे कैंसिल हो जाएंगे. If you want, you can write them down. This is pi. You also have pi in the denominator. They're going to get cancelled. यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. ये कैलकुलेटर से evaluate कर लें and see what you get. 3.5 into 360 divided by 9.26. So I'm getting 136.07. 136.07. You can write it as 136.1 degrees. Remember, degrees के लिए उसने कहा होता है, let me show that to you here. Degrees के लिए आपको 1 decimal place minimum देना होता है, right? तो इसको आपने 3 significant figures में बिल्कुल नहीं करना, उससे ज्यादा होएगा ये. तो यहाँ पे 4 significant बन रहे हैं, लेकिन डिग्रीज के अंदर आपको number of decimal places का सोचना है, कम से कम 1 decimal place, minimum 1 decimal place. So 136.1 degrees is going to be okay. 136 लिखेंगे आपका 1 मार्क कट जाएगा. Okay, अच्छा. Now there's a second paper cup that is mathematically similar. So now we've got similar figures. It's mathematically similar to the cup with volume 110 centimeter cube. The volume of the second cup is given. Calculate the diameter of the top of the second cup. Okay. Volume और length में क्या आपके पास relationship होता है? Similar figures के अंदर, remember, V1 over V2 that equals L1 over L2 whole cube. ठीक है? तो किसको ऊपर वाला वॉल्यूम 1 था, उसका हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 110 over 165. This is volume 2. That equals ऊपर वाले का diameter. Diameter is the length, right? Diameter is the length of from that cup. तो वो कितना था? 7 था. So we got 7 over diameter of the second cup. We don't know what that is. Let's call that D2. या evaluate कर लें, या सिर्फ D कह लेते हैं, just to not overcomplicate things. 7 over D इसका क्यूब कर लें. ठीक है, ये figure out कर लें. What are we going to get? D cube. Let me actually do it step by step. Cross multiply कर लें पहले. 110 D cube that equals 165 into 7 times cube. यहाँ से आपके पास D cube की वैल्यू आ जाएगी. 165 times 7 cube multiplied by divided by 110. That gives me 514.5. And then I can take cube root of this. इसका cube root ले लेते हैं. And that turns out to be 8.013. You can leave it like this if you want, or you can just write 8.01, and that's your final result. Okay, okay, let's move on. Question number 9. So again, we've got mensuration apparently with quadratics. Yeah, so we got quadratics as well. Quadratic equations. Okay. The diagram shows an open box. That's very important. It's an open box. ऊपर वाले face नहीं है इसका. In the shape of a cuboid, the height of the box is x centimeters. The width is 5 centimeters more than its height. Okay, अगर height आपकी x है, तो ये कितनी हो जाएगी? X plus 5. That is the width. Okay, the length of the box is 2 times its width. जो width आपके पास ऊपर आ रही है, उसको 2 से multiply कर देंगे. That's going to be 2 into x plus 5. That is your length of the box.
Write down expressions in terms of x for the width and the length. उसने आपसे वही पूछा है, आप यहाँ पे लिख दें width is x plus 5 and length is going to be 2 times x plus 5. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें सिंप्लीफाई करके लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने सिंप्लीफाई करने का कहा नहीं है आपको. If you just leave it like this, that's also going to be okay. ठीक है. अच्छा. Now the external surface area of the open box is given to be 210 centimeters square. Form an equation on x, show that it simplifies to this thing. Okay, external surface area. अब देखिए कौन कौन से faces आपके पास हैं यहाँ पे. So you got one face that is the bottom here. ये आपके पास एक face है. But remember, it's an open box, तो top surface नहीं है इसका. ठीक है, top surface नहीं है. But then you got one face on the left side, one face on the right side. ये दोनों एक दूसरे के equal हैं. You've got one face on the front. ये front पे एक face आ रहा है. And one face opposite to that on the back side. पीछे वाली side के ऊपर ये दूसरा face. We've got 5 faces in total. इन सब के areas हमें क्या करने हैं? Evaluate करने हैं. इनको total करके 210 से equate कर देना. ठीक है? Let's do that. Length पहले वहाँ पे mention कर लेते हैं. Width आपकी कितनी थी? This is x plus 5. आसान हो जाएगा सोचना. और लेंथ आपके पास नीचे कितनी थी? 2 into x plus 5. ठीक है, ओके. अच्छा, अब देखिए नीचे वाला बॉटम सरफेस में देख रहा हूँ, नीचे वाला सरफेस. ठीक है, ये कितना है? इट्स रेक्टेंगल. दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं लेंथ को. इट्स गोइंग टू बी 2x plus 10 बेसिकली. ठीक है, लेंथ आपकी है 2x plus 10. सो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसकी कितनी उसका एरिया कितना हो जाएगा उसका? 2x plus 10 मल्टीप्लाइड बाय x plus 5. ठीक है, नीचे वाला है that I've shaded in yellow. ये आपका उसका एरिया आ गया. ठीक है. Now the faces on the right side and on the left side. Right और left जो faces हैं वो evaluate कर लें. Right वाला कितना है? x plus 5 into x. लेकिन left में भी आ रहा है वो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. So we say plus 2 into x into x plus 5. ये आपके पास right side वाला रेक्टेंगल और लेफ्ट साइड वाला रेक्टेंगल, ये उनके एरियाज आ गए. प्लस द रेक्टेंगल दैट्स ऑन द फ्रंट, जो आपकी तरफ है, ये वाला रेक्टेंगल, एंड द रेक्टेंगल ऑन द बैक साइड. इनके कितने हैं? रिमेंबर हाइट आपकी x है, तो ये कितना हो जाएगा? x into 2x plus 10, but there are 2 rectangles like this, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे. 2 into x into 2x plus 10. These are these blue rectangles. ये इनके एरियाज आ गए. ये आपके पास टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया. व्हाट शुड ऑल ऑफ दिस ऐड अप टू? इट शुड ऐड अप टू 210. ये उसने बताया हुआ है. टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया इज 210. उसको उससे इक्वेट कर दें. ठीक है, लेट्स इवैल्यूएट दिस नाउ. ये पूरा इवैल्यूएट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें. व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 10x plus 10x plus 50 plus 2x square plus 2x into 5, which is 10x, plus 2x into 2x, that is 4x square, plus 2x into 10, that is 20 times x, that equals 210. Let's simplify everything on the left side. X square वाले terms कौन सी हैं? X square, 2x square, that's total 8x square on the left side. 10, 10, 20, 20, and 10, 30, 30, and 20, that is 50. So we've got 50x. अच्छा, इसने कहा शो करने का, राइट? तो डू इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, आपने वर्किंग शो करनी है. नेक्स्ट इज कांस्टेंट्स 50 एंड दैट्स इट. 50 आपके पास एक कांस्टेंट है सर, हम 50 लिख देते हैं पहले. minus 210, that equals 0. What do we get from this? We get 8x square plus 50x minus 160 equals 0. If we simplify this, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 4x square plus 25x minus 80 equals 0. And that's what we had to show there. ये आपने शो कर दिया, ये शो करना था. Okay, so you got that quadratic equation. All right. Now it says solve this equation, showing your working, show your working and give your answers correct to 2 decimal places. Now again,
You've got to make sure that you show your working here. Working के बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अच्छा, उसने कहा अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जब उसने बता दिया होता है ना डेसिमल प्लेसेस में आंसर आना, इसका मतलब होता है कि इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा. इफ यू वांट यू कैन थिंक अबाउट दिस, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं पॉसिबल होंगे, आप नहीं कर सकते, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a, b and c then? a is 4, b is 25 and c is minus 80. Quadratic formula में values input कर दें. X equals minus b, that's minus 25, plus minus square root of 25 squared minus 4 times 4 times minus 80. Write everything in brackets, otherwise आपके sign errors होंगे. Make sure that you are writing everything in brackets properly. Divided by 2 times a, that's 2 times 4. Okay. Now again, showing working is absolutely important. इसको step by step करना है. आपके पास क्या आता है इससे? Minus 25 plus minus, इसको evaluate कर लें. Square root of 25 square minus that, so that's 25 squared plus 4 into 4 into 80. That's 800,000 inside the square root. And that gives me minus 25 plus square root of 800,000, that is 894.4. वर्किंग में ज्यादा एक्यूरेसी रखनी ताकि आपके फाइनल आंसर ठीक आए. डिवाइडेड बाय 8, एक ये आ गया मेरे पास. दूसरा आ रहा है माइनस 25 माइनस, लेट्स चेक इफ इट मेक्स सेंस, बिकॉज़ बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं. x की वैल्यू इतनी बड़ी हो सकती है वहां पे. तो external surface area is 210, तो इतने बड़े नंबर्स नहीं आने चाहिए. There might be some error somewhere. Let's check. 4 into 4 into minus 80. Is my calculation correct here? Okay, is there some error somewhere? Zero गलत लगा दिए. 25 squared minus 4 into 4 into 80. Yeah, so there's something wrong with what I've done here. 800,000. Yes, this looks like the wrong number. इसको मैं change कर देता हूँ. Square root के अंदर मेरे पास actually कुछ और आ रहा है यहाँ पे. This is 1,905. 1905 are. So this is 1905. 25 square plus 4 into 4 into 80. Yes, I don't know what I did earlier. Yeah, so मैंने यहाँ पे इसको multiply कर दिया था instead of adding or subtracting. Okay, so what do we get from this? 1905 का square root. That turns out to be 43.646, and this is also 43.646. इन दोनों को evaluate कर लें. अब आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे. इसको ऑफ कोर्स आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए. कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, उससे आप डायरेक्टली सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं. लेकिन आपने वर्किंग शो करनी है. वर्किंग बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इससे. -25 plus 43.646 divided by 8, that gives me 2.33. And the other one, -25, इसको minus कर दूं, divided by 8, that gives me 8.58 negative. These are my two final results. I think at the 2 decimal places तक आपको instruction वो exactly follow करनी है. It should be 2.33 here and -8.58 here. These are the two results that we've got for X. Okay. Now it says calculate the volume of the box. Volume क्या होता है? It's just the product of all sides. Cuboid है ना? Cuboid का volume क्या होता है? Length into width into height. Length कितनी है? Length is 2x plus 10.
into width, that was x plus 5, into height, that is x. इन तीनों को आपने basically बस multiply करना. आप अलग अलग x की values डाल सकते हैं if you want, but remember x की दो values आ रही थी आपके पास 2.33 and minus 8.58. Since you have x as height here, इसका मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकती, आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है 2.33. राइट, दिस इज द वैल्यू दैट यू गोइंग टू बी यूजिंग. आप इसको डायरेक्टली यहीं पे इनपुट कर दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें, या पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद इनपुट कर दें, दैट्स योर चॉइस. डायरेक्टली कर देंगे तो आसान हो जाएगा. यहाँ पे डायरेक्टली इवैल्यूएट कर लेते हैं इन तीनों को, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 into 2.33 plus 10 into 2.33 plus 5 into 2.33. ठीक है, first bracket evaluate कर लें. Let's see what we get from this. That's going to be 14.66, I think, into 7.33 into 2.33. Now you can just multiply these numbers, 14.66 into 7.33 into 2.33. And that's giving me 250.38. Yeah, so 250.38. इसको राउंड अप करके लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं. You can say this is 250.4, or you can also round it up to three significant figures. इसका 250 भी लिख सकते हैं, but this is also fine. Okay, so that's the final result for the volume. Okay, we got another part here. Now it says the box is filled with chocolates. The mass of the chocolates is 250 grams, correct to the nearest 10 grams. Okay, correct to the nearest 10 grams, the mass is 250 grams. The total mass of the box and the chocolates is 262 grams, correct to the nearest gram. Now this is correct to the nearest gram. Calculate the lower bound of the mass of the box. Okay, lower bound of the mass of the box. Now let's think about it. Mass of the chocolates is given, and the total mass of the box and the chocolates, that is also given. अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको दोनों को अलग अलग evaluate कर लेते हैं. Mass of chocolates, this is correct to the nearest 10 grams. Okay, what does that mean? 250 plus minus 10 का half. 10 का half कितना होगा? 5. So basically इसकी limits क्या हो सकती हैं, इसकी bounds क्या हो सकती हैं? They can be from 245 to 255. ये आपके पास चॉकलेट के मास की बाउंड है. ठीक है, that is from 245 to 255. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है? We've got the total mass of the box and the chocolates. What is that? That's given to the nearest gram. Nearest gram का half क्या होएगा? 1 gram का half, that is 0.5. So that's basically going to be 262 plus minus 0.5. Okay, that means chocolates can be from the mass, the total mass of the box and the chocolate, that can be from 261.5 to 262.5. ये आपके पास टोटल मास हो सकता है बॉक्स और चॉकलेट्स का, और जो ऊपर वाला मास था हमारे पास, that was only the mass of the chocolates. What are we looking for? We're looking for the mass of the box. अच्छा देखिए, mass of the box क्या होएगा? Mass of box is going to be equal to the total mass of both the box and the chocolates, and we subtract from that the mass of the chocolates. इसी तरह आपके पास mass of box आएगा ना.
Now what are we looking for? We're looking for the lower bound of the mass of the box. यानी कि least possible mass of box आपके पास क्या हो सकता है? अच्छा देखिए आपने क्या सबट्रैक्ट करना है. टोटल मास में से आपने मास ऑफ चॉकलेट्स निकालना है. आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसकी आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए. लोअर बाउंड चाहिए ना, इसकी आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए. इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी आपके पास? आप मास में से, टोटल मास में से मास ऑफ चॉकलेट सबट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर आपको ये पूरा आप टोटल मास में से मास ऑफ चॉकलेट सबट्रैक्ट करें, अगर आपको ये ओवरऑल जो रिजल्ट है वो मिनिमम चाहिए, यू वुड वांट द टोटल मास की मिनिमम वैल्यू and the mass of chocolates की maximum value. That is going to give you the overall minimum number. कि total mass की छोटी वैल्यू यूज करें और mass of chocolates की बड़ी वैल्यू यूज करें, उससे आपके पास सबसे छोटा पॉसिबल नंबर आएगा. So basically 261.5 यहाँ से यूज करेंगे, 255 यहाँ से यूज करेंगे चॉकलेट्स की मैक्सिमम वैल्यू और टोटल मास की मिनिमम वैल्यू. That's going to be 261.5 minus 255 and that's going to give you the final result. ये देख लें क्या आता है. That should be 6.5 grams. That's the least possible value. That's the lower bound of the mass of the box. ठीक है? That's the last part of question number 9. Okay, let's move on to the next question. That's the last question that we have in this paper. It says ABCD is a field on horizontal ground. So it's horizontal ground. It's a field on the horizontal ground. The bearing of B from A is 70 degrees. So B from A, not कहाँ पे बनेगा A के ऊपर, from के बाद A आ रहा है, उससे bearing 70 degrees है. So basically this angle here is 70 degrees. ये उसने बताया. Okay. The bearing of D from A, okay, so A से D के bearing is 125 degrees. That means this total angle is 125 degrees. Now what that means is 125 में से अगर हम 70 minus कर दें, what are we left with? We are left with 55 here. ये angle कितना होना चाहिए? This should be 55 degrees. Okay, yeah. C is due south of B. C is due south of B. So basically ये vertical line है इस तरह से. ये perpendicular बन रहा है आपके पास. And due east of D. So yeah, so we've got a 90 degrees angle there. फिगर पर नजर आ रहा है. AD length is given, BD length is given. Calculate the bearing of D from B. D from B. तो नॉर्थ कहाँ पे बनेगा? B के ऊपर. ये आपके पास नॉर्थ है. D की बेयरिंग चाहिए. D is here. So B से D पे जो लाइन ज्वाइन हो रही है, उसका एंगल यहाँ से देख लेते हैं. We need this angle. ये एंगल आपको चाहिए. अच्छा आप देखें, ये तो आपको पता है पहले, इतना पार्ट तो 180 है. This part is 180, right? So all we want is, because that's a straight line, right? ये पूरी straight line है, 180 angle है. We only need this angle here. ये angle अगर हमें मिल जाए, let's call this theta. If we find this angle, we can write down the bearing there. ठीक है? How do we find this angle now? Let's think about this. ये angle हम किस तरह से figure out करें? Okay. So what we can do is we can think of, अब इस triangle के अंदर इतनी information नहीं है आपके पास, right? So if you have this, if you look at this triangle, we don't really have a lot of information. हमारे पास सिर्फ एक side है, that's 350 degrees. ये side है और ये angle है. Right angle है और एक side है. अगर तो एक चीज और पता होती तो हम evaluate कर सकते. इस triangle में हम directly कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? But we've got another triangle, that's the triangle ABD. Let's think about that first. Triangle ABD का देखते हैं पहले. ABD triangle. Okay. ABD triangle के अंदर we've got this side and we've got this side. इस side के opposite angle भी पता है आपको. एक पेयर आ गया आपके पास side और angle का.
एक साइड दूसरी पता है, उसके ऑपोजिट एंगल आप फिगर आउट कर सकते हैं यूजिंग साइन रूल. लेट्स डू दैट. साइन रूल यूज कर लें इसके ऊपर. लेट्स कॉल दिस एंगल समथिंग एज वेल. अच्छा पहले उसको, इसको थीटा नहीं कहते अभी, हम इसको थीटा कह लेते हैं. कॉल दिस थीटा. So we have sine theta over the angle opposite to that, the side opposite to that, that's 290. That equals sine 55 degrees over 350. यहाँ से क्या होगा, हमारे पास थीटा आ जाएगा. तो जो हमने एंगल है, that's the angle ABD. Let's figure that out. Sin theta क्या आता है हमारे पास यहाँ से, 290 into sin 55. कैलकुलेटर का मोड आपने चेक कर लेना, गलती से रेडियन पे ना हुआ, आपने डिग्रीज पे रखना है उसको. We don't need radians here. In fact, anywhere in O levels आपको नहीं चाहिए होता. बस कैलकुलेटर का मोड एक दफा सही तरह से सेट कर लें, गलती से कभी कभी वो एक डिफरेंट एंगल यूनिट पे चला जाता है. 290 into sin 55 divided by 350. So we have 0.6787 here. Let's find theta from this. Sin inverse कर लें. Sin inverse of this, that gives us 42.74. ये आपके पास ये ऊपर वाला एंगल आ गया. ठीक है, this is 42.74. Now, if you have that angle, what you can do now is you could actually, so you can actually think of it this way. So if this angle is 70, what about this complete angle? ये पूरा एंगल कितना होएगा? ये पूरा एंगल, this is going to be 70 degrees as well. You see, it's alternate angles. This is a vertical line. This is a vertical line. I got this line passing through it. अगर ये एंगल 70 है, ये एंगल भी 70 होगा. ठीक है, तो ये पूरा एंगल 70 है. अगर ये पूरा एंगल 70 है तो एंगल CBD कैसे आ जाएगा? The angle CBD, that's going to be 70, that's the total angle, minus 42.74. Let's see what that gives us. That's going to be 27.26 degrees. ये आपके पास ये एंगल आ गया, the angle CBD. This turns out to be 27.26. ठीक है, अब क्या करना है? आपको बेयरिंग फाइंड करनी थी, टोटल एंगल चाहिए था. ये 180 में इसको ऐड कर दें, तो बेयरिंग जो हमें चाहिए वो कितनी हो जाएगी? बेयरिंग इज 180 plus 27.26, and that turns out to be 207.26 degrees, or you can write it as 207.3 degrees, and that's your final result. ठीक है, so that's what we had to calculate here in this first part. Let's move on to the next one. Now it says a vertical mast is positioned at D. The angle of elevation of the top of the mast from A is 10 degrees. Calculate the angle of elevation of the top of the mast from C. Okay. So this is the figure that we've got. Now what I'm actually going to do is I'm just going to copy this figure here. Just give me a few seconds. Okay, so this is the diagram that we're given. Okay, so what you're basically given is, अच्छा जब मैं इस color में draw कर रहा हूँ ना, it's like purple pink का कोई mixture लगा है. So whatever I'm drawing this color, this is vertical, right? So ये आपके पास जो figure है, this is horizontal. जो मैं उस color में draw करूँगा वो vertical. It's coming out of the page. Okay, so it's positioned at D. D के ऊपर आपका vertical mass position है इस तरह से. Right, it may be like this. Let's call this point M, जहाँ पे वो आपके पास आ रहा है. अच्छा, the angle of elevation at the top of the mast from A से जो आपके पास बन रहा है angle, that is 10 degrees. अच्छा, इसके लिए it's often helpful to draw separate figures. Remember, जो भी आपके पास जिस point के ऊपर
वर्टिकल कोई चीज खड़ी होती है वहां पे सारे एंगल्स 90 बनते हैं। तो डी के ऊपर जो एंगल्स होंगे ना, ए के साथ भी 90 बनेगा, बी के साथ भी 90 बनेगा, सी के साथ भी 90 बनेगा। इन तीनों पॉइंट्स, इन तीनों लाइंस के साथ, पॉइंट्स के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं ना डी के ऊपर, वो सारे 90 हैं। क्यों? क्योंकि डी एम इज वर्टिकल, डी एम इज वर्टिकल, और बाकी सब कुछ हॉरिजॉन्टल है। तो डी के ऊपर सारे एंगल्स 90 होंगे, आपके डी के ऊपर सारे एंगल्स 90 होंगे। Keep that in mind. So what you can do is you can actually draw separate figure here. You can say अभी A के साथ बात हो रही है, so this is B, this is M, M is the top of the mast. A के साथ आपकी ये ट्रायंगल बन रही होगी, ये 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। अब उसने क्या बताया है, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 10 डिग्री, दिस एंगल इज 10, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यू नो द लेंथ AD, दिस लेंथ इज 290, ये आपको पता है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द मास्ट, आप डीएम फाइंड कर सकते हो, राइट। डीएम आपके पास आ जाएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, 290 is the base, 290 is the base, dm is perpendicular, base और perpendicular में क्या रिलेशनशिप होता है, tan, so we can say tan of 10 degrees, I have to take it here. So the first thing we can do is we can say tan of 10 degrees, that is equal to perpendicular, which is dm, over the base, that is 290. So dm आपके पास क्या आ जाएगा, it's going to be 290 into tan of 10 degrees, and that's going to give you a value. Let's evaluate that, 290 into tan of 10. That is 51.135. या आपके पास डीएम आ गया, हाइट आ गई आपके पास। अब इसने क्या कहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास्ट फ्रॉम सी। अच्छा देखें, डी के ऊपर मैंने आपको क्या बताया, सारे एंगल्स जो बन रहे हैं वो 90 के बनेंगे। तो अगर आप वही ट्राइंगल अब सी के साथ बना लो, सो यू मेक अनदर ट्राइंगल ना, you make that triangle with C. DM is again perpendicular. This is C, this is M, this is D. C के साथ भी M, sorry, it's the other way around. D नीचे, M ऊपर है। C के साथ भी जो एंगल बन रहा होगा D के ऊपर, वो 90 डिग्रीज का बनेगा, ठीक है। Now what's the height? We know the height now. That's 51.135. That's the height. ये हमने निकाल लिया। एंगल क्या है वो हमें फिगर आउट करना है, let's call this theta. DC length, do we know that? DC length हमें पता है क्या? DC length हमें अभी नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, evaluate कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? We know some things from the previous part. हमें क्या पता चल गया previous part के अंदर? Yes, we know this angle. ये angle पता है हमें? This is 27.36. 27.26. So we know this angle. ये angle हमें पता है. This angle is 27.26. तो हम क्या कर सकते हैं, हम डीसी लेंथ यहां से निकाल सकते हैं। डीसी लेंथ कैसे आएगी, डीसी उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर है। 350 इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में क्या रेशियो होती है, इट्स साइन ऑफ 27.26 degrees, that should equal perpendicular, which is CD, over the hypotenuse, which is 350, and that's going to give you the value of CD. 350 into sine of 27.26, which turns out to be 160.31. ये CD आ गया। अब उस CD को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप कहेंगे this is 160.31, and now you got another right angle triangle, इसमें से आपको ये theta find करना है। This is the angle of elevation of the top of the mast from the point C. ये कैसे evaluate करेंगे उस एंगल के हिसाब से, this is the base, this is perpendicular और base में क्या relationship होता है, again you've got tan there, tan theta is going to be equal to perpendicular, which is 51.135 divided by the base, which is 160.31. ये आप evaluate कर लेंगे, tan theta turns out to be
equal to 51.135 divided by this, which is 0.31898. You take tan inverse of that, and that gives me 17.69. 17.69 degrees, that's the angle of elevation. You can write it as 17.7 degrees. Round off करके, or you can just leave it like that as well. 17.69 भी छोड़ सकते हैं. That will also be okay, and that's your final result there. Okay, ये आपने last part में करना था. So you had to use 3 different right angle triangles like that. Okay, I hope that was helpful. I think there's no other question after this. Yeah, so that was October, November 2021. We will try to do a few more papers in the next few days, inshallah. So next, I'll see if I can do October, November paper 2-1 as well, and then a couple of May, June papers of 2021. July, in fact, July wala ek hi paper tha, in fact. Yeah, so July wala paper dekhenge. So we'll do that, inshallah. In the next couple of days, you'll find a lot of other helpful material in the description below as well. Do have a look at that. You've got yearly papers, yearly paper 2 solved from 2016 to 2020, and you've got a lot of other videos on the major topics like transformations, vectors, all of those statistical diagrams, sequences, trigonometry, graphs of functions, mensuration, coordinate geometry. उन सब पे उनके past paper questions हैं, उनके कुछ key concepts का review है. You'll find that content helpful, but in the next few days, I'll try to do some more yearly papers from the recent, from 2021 mainly as well, inshallah. Okay, so that's it. I'll see you again tomorrow, hopefully, inshallah. Allah Hafiz.